हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑफ चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा, व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ़ द डिफरेंस इन द गिवन सीक्वेंस, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देन द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वही हमें देखना है कि वेदर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट और नॉट। अगर है डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में बताना है कि फाइंड वेदर द गिवन सीक्वेंसेस आर एपी और नॉट एंड राइट द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन 1 इज 2, 4, 6, 8। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट सोल्यूशन। सो पहले हम लिख लेते हैं कि ये कौन से टर्म्स हैं। T1 इज़ 2, दिस इज़ T1, दिस इज़ T2, T2 इज़ 4, T3 थर्ड टर्म इज़ 6 एंड फोर्थ टर्म T4 इज़ 8 एंड सो ऑन। सो हेयर स्टार्ट करते हैं हम। हेयर T1 इज़ 2। अब हम फाइंड करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। सो T2 माइनस T1, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज 4 माइनस 2 इज 2। डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 6 माइनस 4 इज 2। डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स 8 माइनस 6 इज 2। सो विल राइट T2 माइनस T1 इज T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2। नेक्स्ट T3 माइनस T2, ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, T3 इज 6, T2 इज 4, सो 6 माइनस 4 अगेन इट इज़ 2। देन T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 अगेन, so 8 minus 6 equals to 2. Here the difference between any two consecutive terms is constant. Here the difference between any two consecutive terms is constant. Difference between any two consecutive terms is constant. Therefore this sequence is an AP. This sequence is an AP. This is the answer. And what is the second thing asked? Write the common difference. The common difference जिसको हम बोलते हैं D, that is D equals to the common difference between any two terms is 2. So D is 2. Okay, so both the answers we have written. Whether it is an AP or not, yes, this sequence is an AP. What is the common difference? The common difference between any two consecutive terms, that is 2. D is 2. In this way you have to solve this question number 1. हम इसका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Now let's see sub question number 4. So again write T1 is 0.3, T2 is 0.33, T3 is 0.333. So now here first term T1 is 0.3. Now difference between two consecutive terms, so we will find T2 minus T1. T2 minus T1 is 0.33 minus 0.3. तो क्या डिफरेंस है, 0.30, 0.30, नो 0.30 तो बोलते भी नहीं है, वही से 0.30। तो क्या 0.30 है, नहीं। यहाँ पे हरी में मिस्टेक नहीं करनी है। सो 0.3 means 0.30 and 0.33 minus 0.30 is 0.03. What is the difference? It is 0.03. 0.33 minus 0.3 means 0.30
and the difference is so 3 and 0 and 0, 0.03. Okay, next T3 minus T2 is 0.333 minus 0.33, and that is again 0.333 minus 0.33 means 330. So the difference will be 0.003. What will the difference? It will be 0.003, right? So now see the difference between here T2 minus T1, the difference between two consecutive terms is 0.03, and here the difference is 0.003. So this difference is not constant. We will write here the difference between two consecutive, so here the difference between two consecutive terms is not constant. The difference is not same, it is not constant, therefore this sequence is not an AP. In this way you have to solve these sub questions. Now we will move to question number 2. Now the second question is, write an AP whose first term is A. A is given in each of the example, like here A is 10. So write an AP whose first term is A and the common difference is D. D is also given, common difference is also given. तो हमें क्या करना है, AP लिखना है in each of the following. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. Here A is 10, first term is 10 and D is common difference is 5. ये तो हम orally भी बता सकते हैं कि A means T1 is 10. So what will be the second term? So 10 plus 5, common difference plus करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. So 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25 and so on. लेकिन हमें जो है प्रॉपर मेथड से और लिख के करना है. तो हम लिखेंगे हेयर A इक्वल्स टू, जिसको हम T1 बोलेंगे, हेयर A इज T1 इज 10. सो T2 इक्वल्स टू, अब इसमें T1 में हम जो D है कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करेंगे. सो T1 प्लस D, T1 is 10 and the common difference D is 5, so this is equals to 15. Next T3 के लिए कॉमन डिफरेंस 5 किस में प्लस करेंगे, T2 में, सेकेंड टर्म में, T2 प्लस D. सो T2 is 15 plus 5 equals to 20. Next T4 equals to T3 plus D. T3 is 20 plus 5 equals to 25. So we'll write the required AP. आंसर लिखेंगे the required या needed, जो भी लिखो, required AP is first term is 10, then 15, then 20, then fourth term is 25 and so on. ये so on means 3 dots देना ज़रूरी है जिससे वो AP कंटिन्यू रहेगी. ओके, अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो. जो फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 10 एंड वी हैव टू फाइंड T2 इक्वल्स टू T2. कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस D दैट इज 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15. देन T3 कैसे फाइंड करेंगे, अगेन A प्लस 2D दैट इज 10 प्लस 2D मीन्स 2 into 5. So 10 plus 10 it will be 20. Then T4 equals to A plus 3D equals to 10 plus 3 into 5. So 10 plus 15 is 25. So ये भी मेथड है, ये भी मेथड है. You can solve in any method. Now we'll see sub question number 3. We'll start.
with solution. Here a equals to t1 equals to -7. Now d equals to 1/2, and 1/2 can also be written in decimal form as 0.5. So now we'll write the second term. T2 equals to we can write t1 plus d. T1 is -7 and the common difference is 0.5. Signs are different, so we'll do the difference. So 7 minus, it will be 7 minus 0.5 is 6.5. Sign of greater number, that is -6.5. -6.5. It will not be -7.5. It will be -6.5. We'll do the difference. Next, T3 is T2 plus D. T2 is -6.5 plus 0.5. Again we'll do the difference, and the difference will be -6.0. Then T4 is T3 plus D. T3 is -6.0 plus 0.5. Again it will be -5.5. In this way we'll write the required AP is, write the required AP is, so first term is T1 is -7, then next one is -6.5, then -6.0, then -5.5, and so on. This is the required AP. Now we'll see the question number 3. Now let's see question number 3. Question number 3 और question number 1 लगभग similarity है. In question 1 we are asked whether the given sequence is an AP or not. Here it is given that the given sequence is AP. We have to find the first term and common difference D. So this is the first sub question. Solution. Here T1 is 5, T2 is 1, T3 is -3, T4 is -7. So we'll write, now we have to find the, we'll write here T1 is 5, then common difference D. How to find D? First we will find T2 minus T1. So T2 is 1 minus T1 is 5. 1 minus 5, the difference is, what is the difference? -4. Next, again D, common difference D is T3 minus T2. T3 is -3 minus T2 is, what is T2? T2 is 1. So again this sum is -4. Then D, T4 minus T3. T4 is -7 minus T3 is -3. So this is again equal to T -7, -7, negative positive plus 3 equals to -4. So D is constant. We'll write the answer. We'll write the answer here. First term. Here the first term, that is A. First term is A, and that is it is only 5, and common difference that is D equals to -4. In this way you have to solve these questions. These are very easy questions. Okay.